हाय एवरीवन, आई एम मीनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आई मेक वीडियोस ऑन मेकअप, ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल। सो इफ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड ईजी मेकअप लुक ट्यूटोरियल है। सो सिंस द टाइम दैट आई बिकम अ मॉम, आई नो कि टाइम कितना ज़्यादा कम होता है तैयार होने के लिए, नो मैटर व्हाट द ओकेजन इज। सो आई हैड कम अप विद दिस ग्लैम मेकअप लुक विच इज़ सुपर ईजी टू डू। बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत क्विक हो जाता है, टाइम नहीं लगता है, स्टिल it looks put together. So I thought that I would share this makeup look with all the moms and all the females out there who are like super busy doing everything that they do. And I hope that you like this video. If you do, make sure that you subscribe to the channel, give this video a thumbs up, and let's get started with the video. So as we all know, it is very important to prep your skin before you apply any sort of makeup, because यहाँ पे मेकअप बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बहुत क्विक है, इसलिए मैं सिर्फ बायोटिक का फेस क्रीम यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आप एक हैवी मेकअप चाहते हैं, हैवी बेस लगा रहे हैं फेस को, या लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहते हैं, मैंने एक वीडियो करा है जिसमें मैंने डिटेल में बताया हाउ आई प्रेप माई स्किन बिफोर आई अप्लाई माई मेकअप। आप आई बटन पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वो देख सकते हैं। सो मॉइस्चराइजिंग हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आपका फेस मॉइस्चराइज नहीं होगा, हाइड्रेटेड नहीं होगा, तो मेकअप बहुत ही ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी दिखेगा। सो डोंट मिस दिस स्टेप, मेक श्योर दैट यू हाइड्रेट योर स्किन। सेकेंड, आई एम यूजिंग दिस लॉरियल बेस मैजिक प्राइमर। दिस इज द बेस्ट प्राइमर दैट आई हैव कम अक्रॉस। प्राइमर लगाने से क्या होता है कि आपके पोर्स कवर अप हो जाते हैं, आपको मेकअप लगाने पे एक इवन बेस मिलता है, सो यू कैन वर्क ऑन दैट। सो डोंट मिस primer. Primer is the first and the very most important step in your makeup process. Just apply it all over your face and neck and let it rest for 1 to 2 minutes before you apply your foundation. Next, the foundation that I'm using here is Maybelline Fit Me. The shade that I'm using is 310, that is Sun Beige. Now this foundation is really good for normal to oily skin. So this foundation works really well if you want to do like a very quick and a very light base. I prefer this foundation when I want to do like a very quick and a very light makeup. Also, the very first ingredient of this foundation is aqua or water, hence it is super hydrating. So I just like to dot it all over my face, and the foundation is super runny, so be careful. Next, I'm using this foundation brush. Whenever you're using a foundation brush or you're using a beauty blender or any sort of sponge, make sure that the brush or the blender or the sponge is a bit wet. What I like to do is I like to spray some rose water or normal water on it before I use. It just makes it way easier to blend your foundation and it all goes super even and nice. Next, I'm going to seal this off with this Maybelline Fit Me Compact. The shade that I'm using is Natural Ivory. I think this is one of the best compacts and like one of the most old compacts. Like we've been using it for a very long time. Works very well, super handy, has a mirror, very affordable. So I'm just going to dab it all over my face and neck. This will help to seal the foundation that I've just applied and also helps me to remove the excess oil on my face. Even though you have dry skin, I would suggest that don't miss this step. Do seal your foundation. Next, I'm using this blush, which is my absolute favorite. I'm in love with the shade and the company. The blush is from Deborah Milano and the shade is 13 and the name of the shade is Apricot. This is my absolute favorite. If you are looking for something new, please give this one a try for me. It is fabulous. You'll fall in love with this one. Also, what I like to do is I like to apply some of the blush on my nose and on my chin as well. It just gives like a very nice flushed look to your face and it adds the color which you need. It looks really nice, cute and glowy. So as I said, the makeup is really light, so I'm not going to contour my face, but I'm going to add some bronzer to give that color to my face. Here I am using a blush palette which has blush, bronzer and highlights by Makeup Revolution and the shade is Sugar and Spice.
So I'm just going to apply it on my cheekbones, on my jawline, and on my bridge of the nose. Now here I'm using hands because I don't want any sort of sharp look. I'm just going to add some color, hence I'm using my fingers. Next, from the same palette, I have taken the highlighter and I'm just going to apply it on the high ends of my face just to give the shine and shimmer. Because it's festive season and you gotta bring your shimmer out. Now for eyes, I have used this palette by You Can Be, and the name of the palette is Fruit Pie Filling. This is the first time that I have bought this one. This was an Amazon find and I was really happy with the colors that came with it, and it was really pigmented. If you want me to do like a detailed review of this product, I'd love to. Let me know. So here I'm starting with the golden color and I'm using the golden color as the base. Now golden color is the most available color in each and every palette, so it won't be difficult to find. So just use that golden color as the base. Next I'm going and using a black color and I'm gonna make a V on the outer corner of the eyelid. Just make a V and then fill it in, and it will give you like a very nice light yet very effective smoky effect. Next I'm going to take a lighter color and I'm just gonna use it to highlight the inner corner of my eyes. It will make your eye look bigger and it will make your eye pop. No matter what kind of makeup you're doing, if you do this trick, it always looks very effective and good on any sort of eye makeup. Next I'm going to use a pink color. Now here I'm using pink color because the outfit that I'm wearing right now is pink. If you're wearing any other color, just use that color, whatever matches your outfit, and just outline the whole eye makeup that we have done right now. ये करने से क्या होगा कि आप जो भी ये जो बेस मेकअप है उसके साथ अगर आप एक थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं तो आपके आउटफिट के साथ बहुत ज़्यादा मैच हो जाएगा, बहुत क्विक भी हो जाएगा, यट सबको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा पुट टुगेदर एंड यू मैच द मेकअप विद द आउटफिट. In case you're wearing like a really bright outfit like green or red and you can't add the color, you can use any shade of neutral or natural shade. That will just do the trick, and make sure that you blend it all very nicely and there are no harsh lines. Next I'm using this Maybelline Colossal pen eyeliner. I love using pen eyeliners. They are so easy to use yet looks very nice. So I'm just gonna wing this eyeliner a little bit, not too much. Make sure जहाँ तक आपने आपका आई शेडो लेके गए हैं वहीं तक वो eyeliner रहे, and that's all. Not too bold, not too light, just the perfect line. I'm going to put this on my lower lash line as well, but make sure that आप इसको all the way नहीं लेके जाएं. Like पूरी lash line पे नहीं लगाना है, half तक ही लगाना है. इससे क्या होता है कि आपकी eyes bigger दिखती हैं. Next I'm gonna apply some kajal. I'm using the Lakme kajal, which is obviously the best kajal. अभी तक इसको beat नहीं है. सबसे पुराना, सबसे अच्छा, super affordable. Just gonna line my waterline with it. कभी भी आप काजल लगाएं तो मेक श्योर कि आप लोअर वाटरलाइन के साथ साथ अपर वाटरलाइन पे भी लगा लें, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ. उससे क्या होगा कि आपका काजल ज़्यादा देर तक रहेगा. Then I'm gonna fill my brows using this L'Oreal brow palette, which I am in absolute love with. जब से मैंने ये पैलेट लिया है, I have not opted for anything else. This is the best eyebrow palette. If you're looking for something, you can definitely give this one a try. Now मैं बहुत ज़्यादा eyebrows fill नहीं करूँगी, बहुत ही ज़्यादा light रखना चाहती हूँ because मेरी eyebrows already grown out हो चुकी हैं, तो मुझे और ज़्यादा बहुत बड़ी eyebrows नहीं अच्छी लगती हैं. Just lightly I'm gonna fill them up, and I'm not gonna give any sort of shape, just randomly filling the natural brows that I have. I'm also adding a bit of highlighter on my brow bone. Next, using the eyelash curler, I'm gonna curl my eyelashes
अगेन आपको बता रही हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक आई लैश कलर में इन्वेस्ट नहीं करा है, प्लीज़ डू दैट. इट मेक्स योर आई लैशेस लिफ्ट. बहुत अच्छा इफेक्ट आता है नेचुरल. अगर आप मस्कारा लगाते हैं और कलर के बाद लगाते हैं तो बहुत विजिबल डिफरेंस होता है. तो मेक श्योर दैट यू बाय वन. आई एम गोइंग टू यूज दिस मस्कारा बाय फेसेस. This was the first time that I've used this mascara and I was really impressed. First of all, इसकी wand है वो बहुत अच्छी थी. Now next, make sure जब भी आप मस्कारा लगाएं तो एक कर्लिंग मोशन में लगाएं. इससे आपकी eyelashes को थोड़ा वॉल्यूम मिलता है, एक लिफ्ट मिलता है. So make sure you do that and don't forget your lower lashes as well. Talking about the mascara, really good mascara, super affordable. I have been loving it. नेक्स्ट मैंने फेसेस की ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और न्यूट्रल लिप शेड यूज़ करा है. इन केस अगर आप वंडर कर रहे हैं कि शेड क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट रिमेंबर इट. नाउ ये लुक के साथ एक नेचुरल और न्यूट्रल लिप शेड आप करेंगे तो कभी भी ये लुक किसी भी आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा. अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लिपस्टिक लेते हैं, जैसे कि रेड ले लेते हैं, प्लम ले लेते हैं, मरून ले लेते हैं, तो कलर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है जो आप आउटफिट के साथ उसे कर सकते हैं. वेराज अगर नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल भी नहीं है, एक काफ़ी अच्छा कलर है. सो यू कैन मैच इट विद एनी सॉर्ट ऑफ आउटफिट. फाइनली सेटिंग माई मेकअप विद अ सेटिंग स्प्रे बाय फेसेस अगेन एंड दैट्स इट. वी आर डन. I hope that you have liked this video. This was a very simple and easy makeup tutorial, yet super glam and festive. So this was it for today. I'll see you in my next video. Till then, be you, be beautiful.